Hello and welcome to the last day, the 10th day of our program, the foundation classes for class 11 beginners. We are joined by Ayush, Harsita, Rudra, and Cecil by now. Do you have anything to ask me? Or you are completely tired of continuous classes? Anyone wants to ask something to me? No? Yes, sir. Sir, Kalira assignment 7 number 7 or 8. Go 7 and 8. Sir, concentration solution. 8 मैं खाली concentration. मतलब sir, concentration solution part 1 था थिला. Oh. हाँ. कितना नंबर? 7 or 8. Are you able to see my screen? Yes, sir. This one? Yes, sir. 7 and 8, right? Yes, sir. Okay. It goes like this. What are the concentrations of aluminum and sulfate? Means aluminum and sulfate ions in a 3 molar solution of aluminum sulfate. Well, aluminum aluminum sulfate, one formula unit produces 2 aluminum ion and 3 sulfate ions. And therefore, if the concentration of aluminum sulfate, whole aluminum sulfate is 3m, this will be 2 into 3, 6 molar, and this will be 3 into 3, 9 molar. 1 mole of sulfate contains 2 moles of aluminum ion and 3 moles of sulfate ion in 1 liter solution. If the molarity of the whole aluminum sulfate is 3, that means 3 moles are there in 1 mole, 1 liter, then obviously number of moles of aluminum ion will be 3 2s are 6 and sulfate ion is 3 3s are 9. Got it? It's very simple. Yes, sir. And the next one,
100 ml of 0.1 m sodium sulfate and 200 ml of 0.2 m aluminum sulfate were mixed. Calculate the molarities of each ion in the mixture. Now, individually, we have to find out the number of millimoles or moles. In sodium sulfate solution, the number of millimoles of sodium sulfate is equal to volume into molarity. 100 into 0.1, that is equal to 10. So millimoles of sodium ion is 2 times, because in the formula Na2. So 2 into 10, 20, and the millimoles of sulfate ion is same. Now let us do the same thing for aluminum sulfate. In aluminum sulfate solution, millimoles of aluminum sulfate will be equal to 200 into 0.2. So this will be 40. Then the number of aluminum ion millimoles of millimoles of aluminum ion will be 2 times that, 40 into 2, 80. And millimoles of sulfate ion is equal to 3 into 40 into 3, 120. Then you have to add up. Sodium ion is uncommon, aluminum ion is uncommon, but the common is sulfate ion. So sodium mixture, sodium ion is only from one source, aluminum ion is from one source, but sulfate ion will be from 2 sources. Millimoles. From sodium sulfate it is 10, and from aluminum sulfate it is 120. And therefore it is 130. And you have to add the total volume of the solution, volume of mixture. Because after mixing, the total volume of the solution becomes 100 plus 200, 300. ml. Then you have to find out the molarity of individual ions. So to find out the molarity is represented by square bracket. This means molarity of the particular species which is lying inside the square bracket. So Na plus molarity is equal to the number of moles of Na plus is 20 by total volume of the solution is 30. Sorry, 300. I'm so sorry, 300. So it is 1 by 15 m. Sodium ion concentration or molarity is 1 by 15 m. And aluminum ion concentration is 80 by 300, because the volume of the mixture will be same for all the ions, individual ions. So it will be 4 by 15 m. And sulfate ion will be high. It will be 130 by 300. That is equal to 13 by 30 m. Right? You got it? So this is 1 by 15. This is 4 by 15, and this is 13 by 30. Cecil, got it? Yes, sir. So, Thank you, sir. in our midst, we have now Ashish Tripathi and Krishna Agrawal Bhaiya and Pranav Samidha. Okay. Any other thing you want to ask before I start trekking to the Kilimanjaro mountain top? Excuse me, sir. Ayush. Sir, STP ରେ ନଥିଲେ ଗୋଟେ ଗ୍ୟାସ ର ମୋଲ ଆଉ ଭଲ୍ୟୁମ କେମିତି ଗଢା ହବ? STP ରେ ନଥିଲେ? ଆଜ୍ଞା Okay. sir. Okay. STP ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ଯଦି କୌଣସି ଭଲ୍ୟୁମ
sorry, अन्य कोनोसी temperature and pressure रे, if you are given a volume, then before going for calculation using 22.4 liters for 1 mole at STP, you have to convert the volume from the non-STP condition to the STP condition. So for that, you will be using the combined gas equation. You will be knowing in your gaseous state chapter. Combined gas equation, P1 V1 by T1 is equal to P2 V2 by T2. This is the combined Boyle's law and Charles' law. Right? So this P1, V1, T1 are the initial conditions of pressure, temperature, and volume, where supposing you are given at a pressure of 800 millimeter, and that at 800 millimeter volume was say 10 liters. Since it is a ratio, you can continue to keep your units same. As long as on both sides the units are same, it doesn't matter whether it is liter or millimeter or atmosphere or whatever. Temperature, supposing it is at 25 degrees Celsius, that is 298 Kelvin. So, but you have to convert to STP before applying the 22.4 concept. So this is 760, this is 1 atmosphere into what is the volume that we are going to find out. T2 is 273, STP temperature is 0 degrees Celsius or 273 Kelvin. So you can find the new volume, what will be at STP. Got it? Yes, sir. Any other thing that you feel like interacting with me, asking me? Welcome those who have started watching from. This is the ultimate extent of your patience level. That you have continued up to the 10th day, that is itself a great achievement. Okay, let me tell you one thing before. Supposing I say that 200 ml of 0.2 N sulfuric acid is equivalent to or completely neutralizes 40 ml of some strength of sodium hydroxide. So what is the normality of the sodium hydroxide whose 40 ml exactly neutralizes 200 ml of or completely neutralizes 200 ml of 0.N sulfuric acid, completely neutralizes. Anybody can tell, Rudra, how to? We call it equivalent to, or put it 3 parallel lines, that is, we say equivalent to, or completely reacts with, or completely neutralizes if it is a acid base neutralization reaction, or if it is a redox reaction, then completely reacts with. Then how to find out this X? Or supposing this X is known and we do not know the volume, either this or this or this or this, any of the 4 variables, we have 3 known and 1 unknown. How you will find the unknown variable? Anyone who can throw some light? କେତେ ହାତ ଟେକି ସାରିଲେଣି ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଏଠି କି ଆଗ ଟେକିଛି ଆଜି ଆୟୁଷ ଆଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଆୟୁଷ ବୁଝିଲ କାଲି ଫାର୍ଷ୍ଟ କିନ୍ତୁ ସବୁ ଏଣ୍ଟାୟାର 10 days ର ଦେଖାଯିବ 10 days ର ଦେଖାହେଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହଉଛି ଆମର ରୁଦ୍ର ସେକେଣ୍ଡ ହଉଛି ଆୟୁଷ କାଲି କିନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ରୁଦ୍ର ଅଲ୍ କରେକ୍ଟ ପଠେଇଥିଲା ଆଗ ବିଫୋର ରୁଦ୍ର ଆୟୁଷ ପଠେଇଥିଲା। So Rudra
दीटा गोटे भूल उत्तर ठीक उत्तर पाखापाखि पठेइथिला किंतु ठीक उत्तरटा जेहेतु लेटर पछरे पठेइथिला so it will be given credit for yesterday. So taking all the 9 days and yesterday's performance, he is adjudged to be number 1, and accordingly you will be contacted and you will be given away the prize. And second is Ayush, how none other could come to the fray. ଜଣେ ଅଧେ କିଏ ମଝିରେ ମଝିରେ କରୁଥିଲ बट कंसिस्टेंटली आउ कहीं कर କିଛି କିଛି। सो भैया अगर नहीं भैया बाद में पूछेंगे। अच्छा आयुष कहलो सर फर्स्ट H2SO4 मिली इक्विवेलेंट फर्स्ट करियो केमती बाहर करियो बाबा 200 ml into 0.2 अच्छा ताहले तो 40 मिली इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 40 into x ओके ता माने काली जो हमें गीत बोली थिले दिस म्यूज सॉन्ग दैट we sang yesterday, that principle will be valued. What is that song? Who can remind me? Yes, Sizzle, what was the song? So all chemical reactions are equivalent. नहीं takes place in equivalent. Are equivalent no? और लिखी दियो ठीक है. All chemical reactions take place in equivalents. गीत बोलो. All chemical reactions take place in Harshita, take place in Sir, in equivalents. गीतरे बोलिबो ना हो खाली सेमती कहले इक्विवेलेंट्स ओके ता माने गोटे रिएक्टेंट रो V1 जदी वॉल्यूम N1 जदी नॉर्मलिटी जेति की हबो आ गोटे रिएक्टेंट जदी कंप्लीटली रिएक्ट करिछि तार नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स V2 into N2 सेति की तणु हमर इक्विवेलेंट कांसेप्ट रे फार्मूला होछि V1 into N1 is equal to V2 into N2 एटा हला मूल मंत्र इक्विवेलेंट कांसेप्ट रो इन ए केमिकल रिएक्शंस यदि हमें नॉर्मलिटी जानि छे वॉल्यूम जानि छे आ दीटा सॉल्यूशन परस्पर कंप्लीटली रिएक्शन हेछि देन आर V1 N1 रो गुणफल विल बी सेम एज V2 N2 तार सो दैट प्रिंसिपल सो हेतबे कोन होबो एटा केमति बाहर करबा सेटा आउट इजी कर दिए कैलकुलेशन को आमको आउ इक्वेशन लिखिया को पड़िबोनी बैलेंस करिया को पड़िबोनी आमे खाली एन फैक्टर जानिचे सल्फ्यूरिक एसिड रो दरकार नहीं से तो नॉर्मलिटी देइछि और दरकार पड़ले मोलारिटी देइथिले भी आमे ताको कन्वर्ट कर दबा नॉर्मलिटी को एंड V1 N1 = V2 N2 कर दबा सो 200 into 0.2 V1 into N1 200 into 0.2 that will be equal to 50 ना कहते 40 into x. The volume of the base solution is 40 into x. It doesn't matter whether it is NaOH or sodium carbonate or whatever. Whatever may be the base. तर नारू किसी जाए से नहीं. तर नॉर्मलिटी भार जी. So x कितने भार ला? x कितने n? 1 by 40. 1n. It's a normal solution of 40 ml. Nele 200 ml of NaOH ने ले 200 ml of 0.2 सल्फ्यूरिक एसिड संगरे कंप्लीटली रिएक्ट हे जीवो अच्छा आ गोटे क्वेश्चन टे कलो देखिबा मु चाहू जी तुमे गोटे काम करिया को व्हाट वॉल्यूम ऑफ पोटेशियम 0.1 m potassium dichromate Cr2O7 solution will completely react with say 50 ml of 0.3 m oxalic acid H2C2O4 oxalic acid solution. Can anyone just guess what? Supposing in acidic medium, acidic one H2SO4 dilute sulfuric acid medium.
in acidic medium. So can you tell me what is the net ionic equation? Forget about these spectators, dichromate ion and H plus ion and oxalic acid. Oxalic acid is not a soluble substance. I mean, is not a ionizable substance. You can keep it as such. It is a weak acid, H2C2O4, or you can call it HC2O4, and that will give you Cr3 plus CO2 plus water. So where oxalic acid, if I ask you what is the N factor for oxalic acid, who can tell me? What factor you divide with the molar mass of oxalic acid to find its equivalent mass? Yes, Rudra? Oxalic acid ro N factor kete hobo? Rudra, welcome. Sir, हाँ, sir एठी +3 रु जाइछि +4 को मते कहूनो N factor kete hobo? सर दीटा पेन चेंज होछि 2 तो टोटल केते हला मते कहूनो? सर 2 Yes, precisely the N factor is 2. तो oxalic acid रो जदि कहबी equivalent mass केते तार molar mass by 2. 90 तार molar mass बाहरिबो by 245. काहेकि ना आर ऑक्सीडेशन नंबर जदि बाहर करिवो एटी +3 अछि oxalic acid एटी +4 अछि. गोटे कार्बन एटम पिछा if the change is 1, then there are 2 carbon atoms, the total change is 2. So the N factor is 2. Can you tell me what is the N factor of dichromate ion or say potassium dichromate? Who can tell me? Raise your hands. Rudra hath टेकिछि आउ के आयुष प्रणव कहबो प्रणव Sir, 6. काहेकि Sir, because जो Cr plus 6 अछि ता ऊपरे से Very good. गला Cr3 plus को Very good. So आउ yes, you are correct. So से कहूची +6 रू +3 को गला change हला जदि 3 for 1 atom, then for 2 atoms the change is 6. So the N factor for oxalic acid is 6. Precisely correct. Whether sorry dichromate ion or potassium dichromate, जहाँ ले भी अरे N factor होची molar mass by 6. So जानी गले तेणु जेहेतु आमे V1 N1 equal to V2 into करियो को चाहूचे आउ आमको इक्वेशन लेखिकरी बैलेंसिंग करियो को आमको इच्छा हो नहीं तेबे आमे N factor जानिचे से केस रे आमे मोलारिटी को नॉर्मालिटी को चेंज करी V1 N1 is equal to V2 N2 करी पारिबा. So tell me potassium dichromate रो 0.1 m solution ता केते N? I told you last time yesterday that molarity is numerically a lower value. So to convert molarity into normality, the N factor to be multiplied with molarity to get normality. And to convert normality into molarity, back to molarity, then you have to divide normality by that same N factor. So, को देखिबा 0.1 m potassium dichromate ता केते normal? Ayush? 0.6 N. Precisely. Potassium dichromate रो जदि N factor 6 हला N factor होची 6 तबे 0.1 m potassium dichromate solution जहा 0.1 into 6 that is equal to 0.6 n potassium dichromate सैया जो purpose में सेटा यूज हेची as a redox reaction as an oxidant and किए कहबो 0.3 m oxalic acid समान केते n sorry S2C2O4 I'm so sorry. So 0.3 m oxalic acid समान केते n oxalic acid? Yes. How कौन Sir, 0.6. Very good. 0.3 into the N factor of oxalic acid is 2. Just like I have explained to you, the N factor here for oxalic acid is 2. Carbon ta +3 to +4 को गला and dita carbon पाई the total change is 2. So it is +6. तापर गाड़ी चलला V1 N1 is equal to V2 N2. सेटा तुमको इजी कर देला जे व्हाट वॉल्यूम जोटा कि x नबा पोटासियम डाइक्रोमेट रो वॉल्यूम देइनी इनटू x
होची 0.6 ना केते केते 0.6 अरे ये भी 0.6 कोण आला ये भी 0.6 ये भी 0.6 एटा 0.3 रे 2 गुणी 0.6 एटा 0.1 रे 6 गुणी 0.6 कमाल हो गया एंड इट आगियो 50 ml ऑफ 50 into सेही 0.6 ताले केते अब आंसर सर say 50 ml. सेही 50 ml दरकार हबो ऑफ K2Cr2O7 सॉल्यूशन तमर जदि मोलारिटी पचार थांता तमे कोन करि थांता धर वॉल्यूम देई थांता मोलारिटी पचार थांता तमे कोन कर थांता V1 N1 V2 N2 करि करि आगो नॉर्मलिटी बाहर कर थांता देन n फैक्टर रे डिवाइड करि करि मोलारिटी परिवेषण कर थांता वुड हैव सर्व्ड finally the molarity. Once you get normality, then the factor is to be divided by molarity to get the factor to be divided by normality to get molarity, because molarity is numerically a lower value. So anyone watching the YouTube direct telecast, please write something. Someone is viewing, but okay. Who have understood? Raise your hands. Samidha, Sejal, Rudra Kochi. Pranopta said they are participating in huge scale. Although he joined, Pranab joined late, but he is joining in full dum, full spirit today. That's great. Okay. Then I will talk about titration. Volumetric analysis. Titration experiment. एथरे तीनटा टर्म जानिबो एनालाइट सॉल्यूशन जोटा कोनिकल फ्लास्क रे निया जाए मु देखिबि तुमको कोथरे निया जाए ना पिपेट सहायता रे अमेरिकन इंग्लिश पीईटी पिपेट सहायता रे निया जाए and there is another word is burette जोथरे की रखा जाए टाइट्रांट एनालाइट एटा टाइट्रांट रखा जाए and you have to use a drop or 2 drops of indicator either for acid base titration you can have phenolphthalein or methyl orange and so on and so forth. If it is a redox titration, what if it is a titration using potassium permanganate, then no indicator because KMnO4 itself will act as an indicator. I will explain to you. So these 4 things you must bear in mind, and I am showing you how you will do that. This V1 N1 V2 N2 is now going deep into your gene. Now the titration is done like this. Yes, see this. This is a conical flask where you will transfer a given volume of a solution whose concentration you do not know. You are going to find out by using the formula V1N1 is equal to V2N2. So that is the analyte. You want to analyze, its concentration is not known, but you can jolly well use a pipette. Nowadays, in our time, or even up to 2000, I find that even today, you are not given the pro pipette to suck out. You know, guys, they were using their, mouth to blow out using their pipette. There was a risk that they can gulp some acid or base or whatever reaction solution they will be sucking out. They may enter into their buccal cavity, into their stomach and do the nuisance. So therefore, a very small little pro pipette is available made up of rubber with absolute control of the pressure. So by pressing a knob, you can raise the liquid up, and the other knob, you can press it down and keep exactly at the point where there is a mark. This is a 20 milliliter pipette where there is a mark at the upper part,
and you draw the liquid from the original stock solution by using a probe pipette to the same level and then transfer it to the conical flask and then add a drop of indicator. And it will have some solution visible to you. It will have some solution. Some color. It will be having some color. Then keep it below a already fixed stand carrying a burette. This burette will carry another solution with which it will react. And that solution which you take in the burette is called titrant. Burette is B-U-R-E-T-T, but American English is B-U-R-E-T, burette. Supposing you have an acid solution whose concentration is not known, you exactly measured 20 ml or 10 ml. There are pipettes of several sizes, several volumes are available in the market. 10 ml pipette, 20 ml pipette, 40 ml pipette. So you use according to your convenience, transfer the liquid, and then add a drop of indicator. It will be looking like something. Supposing it is acid, you add a drop of phenolphthalein, it will be still colorless. Nothing will be there. But start adding slowly the titrant sodium hydroxide solution whose concentration is already known. If the concentration is already determined, known, it is called a standard NaOH. It has been standardized. I'll talk more about standardization after some time. So now you start adding slowly, and shake it time to time. You close this knob and then bring out the conical flask and very carefully swirl this solution so that they will mix homogeneously, and then add more and more slowly until a point will come, one drop excess of the titrant will drastically change the color from one to the other. In this case, it was colorless, it will be pink. The appearance of sudden pink color by adding a single extra drop of the titrant will indicate that yes, no more addition. That is called the end point. So you continue to add till end point. First, what happens while you perform the experiment in your class 11 laboratory, it is possible that you surpass the end point because you are not sure whether end point will come now or later, even if you are little cautious. So if at all you find that some excess sodium hydroxide or excess titrant has been added so that you have surpassed the end point to a large extent, then okay, you jot it down. If that has happened with the total volume of the titrant solution needed, we say 20.7, then you reject that experiment, you throw out the solution in the conical flask, wash it properly, and then take another 20 ml of the same stock solution in the conical flask, add a drop of indicator, again fill the burette, take the initial burette reading. There are calibrations, so you can take the reading, initial reading, how much is there, and finally when the end point will come, then you also take the reading and the difference will tell you the titer value. Yes, I forgot to tell you that difference, whatever is the actual amount needed, actual volume required, that is called the titer value. What is the titer? Where is it is written? Somewhere it is written. Titer. Okay. So the first experiment often is rough. It is not correct reading. It is rough reading. That will give you an idea that 20.7. I have done added little excess. So next experiment, you be little more cautious. Up to 15 ml or say 18 ml, you can straightway add 18 ml at a stretch and then close the stopper and remove it, shake it, swirl it, and then you will find there is no color development. Maybe initially when we are adding rapidly in that localized region, you will find some pink color because at the localized, because when the reaction will spread throughout the bulk of the solution, it will be again colorless.
Now after 18 ml, you start adding drop by drop. Add 1 drop, sec. Add 1 drop, sec. Add 1 drop, sec. So when you find only 1 drop excess, that will bring you the end point. That is the exact titer value. And you repeat this 3 times until you get 3 identical readings. In physics experiment, the errors are so very, inevitable that you cannot get identical readings. Identical readings are called concordant readings. So you have to take the average. You take 10 experiments, you take the average of the 10 or 5, that will give you the best answer. But in chemistry, these things are very accurately determined. Until you get 3 identical or concordant readings, titer values, you repeat. And then there is no point in finding average. So that concordant reading is the titer value. Apply V1, N1, V2, N2, you will get. So here is a pro pipette. This is the pipette. This is called the pro pipette, wrongly written as pipette. This is a pipette. You have used a small little rubber instrument. I mean, I'll show you a pro pipette to exactly suck out the required amount of the liquid from a now you have brought it from the reservoir, from the stock solution, from some other source, and you are now transferring 20 ml or 30 ml or 10 ml to the conical flask, and then added a drop of indicator. এটা কোন ইতি বডি গলা এতিকি ଥିଲା ଏତିକି কোন ହେଇଗଲା আচ্ছা ବଢିବ କେମ drop पे କି 2 drop ପକେଇବ, and then you bring it under a burette which is already filled with the other reactant solution, and then start the process till the end point, till the end point comes. So I forgot to write down end point. There is another term is end point. End point is marked by sharp color change. Is marked by sharp color change. You have to add the, so you have to add the titrant from the burette until exact color change, the end point. So this is the titration experiment, whether it is a redox whether it is an acid-base reaction or an oxidizing agent, reducing agent reaction, doesn't matter. Every reaction has a particular indicator. Acid-base reaction, the indicator is phenolphthalein or methyl orange or litmus. There are so many. So there are 3 types of titrations: acid-base, redox, precipitation titration. Now, just I am really interested to show you, because you are not a class 8 student. फिर भी मैं आपको दिखाना चाहता हूं. Before filling it. Before filling a burette, we should make sure we place a small glass funnel in the top. We should also make sure we've got the That is a pro pipette. Here we're going to use a more traditional rubber bowl pipette filler. Pro pipette, say that. Carefully to the end of the A colata. pipette.
ସାର୍ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ଅଡିଓଟା ଶୁଭୁନି। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ଅଡିଓଟା ଶୁଭୁନି। ରୁଦ୍ର କଣ କହିଲ? ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ଅଡିଓଟା ଯେତେବେଳେ ଭିଡିଓଟା ଚାଲିଥିଲା ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଅଡିବୁଲ ନଥିଲେ। ଓହୋ, ମୁଁ ଅଡିଓଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲି, ସରି। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଇଆଡେ ପାଖ କରୁଛି, ଦେଖିବାକୁ ଅଡିଓ ବନ୍ଦ, ମୁଁ ଏଟାକୁ ଅଡିଓ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲି। ଓକେ, ନାଉ ଆଇ ଏମ୍ ଅଡିବଲ। ୟେସ୍ ସାର୍। ଓକେ, Where's the solution in the conical flask? ଇଏ ଆଲକାଲିଟାକୁ ନେଇଛି ତଳେ, ଉପରେ ନେଇଛି ଏସିଡ, ସେମିତି କିଛି ମାନେ ନାହିଁ କୋଉଟା ଯାହାର This is the ସଲ୍ୟୁସନ dynamics. ଅନନୋନ କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ Took ଆଡ କରୁଛି। us- ଏଟା ରଫ୍ ରିଡିଂ ଟା ବେଶୀ ନେଇଗଲା, ସେତେଟା କେୟାରଫୁଲି ନେଲାନି। Look at the volume of solution which we added from the burette by noting the final burette reading. So final forming a- ଇନିशिଆଲ ରିଡିଂ ନେଇଥିଲା, ଫାଇନାଲ ରିଡିଂ ମାଇନସ This କରିଦେଲା, takes we've added just ଟିକେ ଅଧିକା ହେଇଗଲା। 8 centimeters to keep them together. So we can reasonably expect, all right? ତାପରେ ସେ ଆଉଥରେ କରିବ, ଧୀରେ ଡ୍ରପ ବାଇ ଡ୍ରପ ମିଶେଇବ, ଡ୍ରପ ବାଇ ଡ୍ରପ ମିଶେଇକିରି ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଡ୍ରପ ରେ କଲରଲେସ୍ ହେଇଯିବ। ଏଟା ଉଲ୍ଟା କରିଛି। Here you can see the solution running in quickly. ପ୍ରଥମେ ଆଗ ଧର ରଫ୍ ରିଡିଂ ରେ 20.7 ଆସିଥିଲା, 18 ମିଲିଲିଟର ଆଡ୍ କରିଦିଅ କ୍ୱିକଲି, ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଡ୍ରପ ବାଇ ଡ୍ରପ କର till the end point. So that is the end. Okay, common indicators which are used, am I audible? ୟେସ୍ ସାର୍। Yes. The common indicators which are used in acid base titrations are methyl orange. If you are taking an acid in the conical flask, it will be pink, and after adding the alkali, it will be yellow, or the vice versa. Methyl red is very close, red, yellow. Litmus, red, yellow, red, blue. If you are taking acid in the conical flask, then adding litmus, it will be red. And at the end point, it will be turning blue. Phenolphthalein, it is colorless in acid if you are taking acid in the analyte. If you are taking alkali in the analyte, it will be red or pink. And at the end point, it will be colorless. Depending on which one you are taking as analyte in the conical flask, accordingly, the color will be developed. Now coming to redox titrations. One of them will be supposing potassium permanganate solution will be keeping in the burette, and ferrous sulfate solution or hydrogen peroxide solution or oxalic acid solution, as I was talking, any reductant solution will be taken as analyte in the conical flask, and oxidant will be kept on in a burette. So if you are using KMNO4, then self-indicator. You have to use KMNO4 in the burette. No way out. Because extra 1 drop, as long as the reaction continues, as long as you add KMNO4, immediately the pink color, the purple color will vanish. But the moment endpoint comes, an additional 1 drop excess of KMNO4 will render the entire solution purple. That is the endpoint, self-indicator. But you're using the potassium dichromate solution, the orange color of potassium dichromate. For that, you have to add a bit of
other indicator called diphenylamine or N-phenyl anthranilic acid, which will turn the solution green, and then when you add the reductant, for example, you are adding ferrous sulfate at the end point, it will turn purple. So green color will change to purple at the end point if you are using potassium dichromate as the oxidant. And any reducing agent can be ferrous sulfate, can be any other oxalic acid like, can iodide ion like S2S, can be anything. And interestingly, when you are using sodium thiosulfate as the reductant, sodium thiosulfate as the reductant, we shall be shortly discussing about iodimetry. आमे कहिबा डिस्कशन करिबा यूजिंग स्टार्च यूज करा जाए एट इंडिकेटर स्टार संगरे आयोडीन जो बाहरी थाए आयोडीन टाकू आमे धरू जाल पकेकरी धरू सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन रे तेणु आयोडीन को धरिबा पई हेले आयोडीन सॉल्यूशन रे आमे स्टार्च दि चारि ड्रॉप पके दो टे भलो करी पको 1 ml भी पके दो ml पके दो पूरा ब्लू हे जिवो इंटेंस ब्लू then drop by drop sodium thiosulfate burate to pake. 1 drop excess ray, it will be colorless. That is the end point. Then precipitation titration ray, for example, silver nitrate sangre sodium chloride तमे करूचो titration करूचो sodium chloride तळे नैचो ऊपर silver nitrate burate रु छाडुचो then sodium chloride solution रे टिके potassium chromate indicator दिया जाय टिके से सॉल्यूशन टा येलो थिबो द मोमेंट एंड पॉइंट आसी जिवो एक्सेस सिल्वर नाइट्रेट सिल्वर आयन संगरे क्रोमेट आयन मिसिकरी सिल्वर क्रोमेट ब्राउन दे दबो रेडिश ब्राउन कलर आसी जिवो एंड दैट विल टेल यू नो मोर एडिशन एंड पॉइंट हैज कम सो इज वेरी सिंपल थिंग सपोजिंग तुमे की कहला मोल्स पर लीटर बा मोलारिटी को तुमे ग्राम्स पर लीटर रे कन्वर्ट करिवो तो मोल को ग्राम करियो केले तो मोलार मास रे गुणिबो सेमती नॉर्मालिटी माने इक्विवेलेंट्स पर लीटर देछि मतलब को ग्राम पर लीटर करिवो देन इक्विवेलेंट मास रे गुणिबो सो टू कन्वर्ट द मोलारिटी और नॉर्मालिटी इनटू ग्राम्स पर लीटर you multiply with molar mass or equivalent mass as the case may be. If normality is given, then normality is to be multiplied with equivalent mass. If molarity is given, then molarity is to be multiplied with molar mass to get the solution, the concentration of the solution in grams per liter. So we now know another way to express the solution concentration, that is in grams per liter. We had grams per 100 ml solution, we had, that is W by V. But we have here, sometimes it is given in grams per liter. So if that you divide by equivalent mass, there will be normality, you get normality. If you divide molar mass, you get molarity. You convert per liter is fixed. So to convert gram into mole, you divide molar mass. To convert gram into equivalents, you divide equivalent mass. It's very simple. एगुड़ाक V1 into V1 तुमको बाएं हाथ का खेल लागिबो हां आ गोटे जिंस कहबा हमें बिफोर वी जंप इनटू इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स किलिमांजारो रो बेस आसी गला माने मिडल बेस हमें ऊपर को जाइने सेठी सब केते जण इत्ते स्टीप my son was describing why the people they chose not to go because इत्ते लास्ट स्टेज इत्ते स्टीप जे लोकंकर भय बहुत हुए जीवा पाई भय अपेक्षा बेसी हुए दे बिकम फिजिकली अनफिट तार ब्रीथिंग इश्यूज हुए ये हुए तेणुक से जानते तार अभ्यास नथिबो से जाई परिबोनी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कौन मेनी solutions are not standard solution हमें ताको standardize करू for example sodium hydroxide solution is not a standard solution many of the solids they have bad qualities they are deliquescent पानी टाणी आनी करी से dissolve हे जिवे तमे सोडियम हाइड्रोक्साइड बोतल टाको खोलु खोलु टिके नउतबो तमे त पुनी वेइंग मशीन रे ओजन करिवो जे मु गोटे लीटर किया मेजरिंग फ्लास्क अछि कि गोटे लीटर किया बड़ हो जाउची 500 मिलीलीटर मेजरिंग फ्लास्क अच्छी गोटे लीटर पिछा जदि मु 40 ग्राम नेले 1 मोलार बा सेम एज 1 नॉर्मल सॉल्यूशन करिवि तले 500 मिलीलीटर रे आधा 20 ग्राम मु मापिकरी नेबी सो आगे गोटे छोटो बॉटल तार मास नेली एम्प्टी बॉटल
तापरे सोडियम हाइड्रोक्साइड एमती गोटे गोटे पेलेट पेलेट सब थिबो ताकू जेम तुम ट्रांसफर करिवो तुम आखि आगे से पानी ही जीवो इतने highly deliquescent and hygroscopic it will absorb moisture from air and it will be dissolving in it ता भीतर पानी रही जीवो so that तुम्हें भाबुथिबो 20 ग्राम से देखला को 20 ग्राम ही थिबो किंतु एक्चुअल सोडियम हाइड्रोक्साइड 18 ग्राम थाई पारे कोन थाई पारे किछि ठिकाना नै 17 ग्राम भी थाई पारे बाकी तक पानी तेणु जाहु गोटे जेन तेन प्रकार गोटे रफ सॉल्यूशन कर दियो अप्रोक्सीमेटली तुम्हें 1 मोलार करिया चाहूचो कि n/10 हेले 10 भागरु भागे 40 रो 10 भागरु भागे 4 ग्राम इन गोटे लीटर और जदि 500 मिलीलीटर फ्लास्क अछि 2 ग्राम इन 500 ml will make you 0.1 molar or 0.1 normal in the case of sodium hydroxide its n factor is 1 तुम्हें करि दियो किंतु ताकू परवर्ती काल रे जते बेले तमे सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन टाकू यूज करिवो आउ काहा को टाइट्रेशन करिकरी बाहर करिवारे देन सेही सोडियम हाइड्रोक्साइड टाकू तमे स्टैंडर्डाइज इमीडिएटली करिवो सो एवरी एक्सपेरिमेंट पूर्वरु सोडियम हाइड्रोक्साइड को गोटे लिखा हिथिबो सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन अप्रोक्सीमेटली n/10 लिखा हिथिबो तमे जते आसीबो मो सोडियम हाइड्रोक्साइड दरकार आजी सोडियम हाइड्रोक्साइड रो कंसंट्रेशन केते अछि तुम्हें आउ गोटे स्टैंडर्ड एसिड को नहीं जोटा ऑलरेडी स्टैंडर्ड जार किछि गोटे गोटे एसिड नेचर एमती करिछि ना से पानी टाणिबो ना से किछि डिकम्पोज करिवो किछि हबने for long time its concentration will not change by weighing method you can exactly find out the standard you can prepare the standard solution तमे weighing method रे करि पारिबो किछि असुविधा हबनी लाइक एसिड पई गोटे अछि ऑक्सैलिक एसिड सक्सिनिक एसिड एमाने पानी टाणते नहीं सक्सिनिक एसिड सबुठु बेस्ट से पानी मोटे टाणिबो नहीं आराम रे तमे बसी उठी सोईकरी सक्सिनिक एसिड नब ताको काटिबो तार सक्सिनिक एसिड डाइबेसिक एसिड ऑर्गेनिक रे पढिबो डाइबेसिक एसिड तेणु तार जदि तमे नॉर्मलिटी करिवो तार एन फैक्टर हैला 2 तेणु तमे करिकरी से अनुसार भाग माप करदलो एतिकी गोटे लीटर पिछा एति ग्राम तेणु जदि आमर 250 मिलीलीटरिया फ्लास्क अछि ताले 4 भागरु भागे कैलकुलेट करिकी नबो किबा जदि n/10 करिवो सेही अनुसार भाग माप करिकरी तमे धर 2 ग्राम कल n/2 सॉल्यूशन 2 ग्राम इन 250 सीसी करिकरी तमे आनलो मु कहूची सोडियम हाइड्रोक्साइड कथा कहि देली ऑक्सैलिक एसिड हमें मापिनु ऑक्सैलिक एसिड नै सक्सिनिक एसिड कथा मापिनु सो एक्जाक्टली मापिकरी तमे इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस आजिकली मिललानी सुंदर फ्लास्क कुनी कुनी बोतल मिललानी तार एम्प्टी बोतल रो मास नै जाओ तपर धीरे धीरे ऐड करो किछि हबो नै सोडियम हाइड्रोक्साइड बेले जकई जीवनी पानी रे जेमति सोडियम क्लोराइड लूण जेमति पानी रे जकई जाए सेमति सोडियम हाइड्रोक्साइड से पानी रे एकदम पूरा डिसॉल्व कर जो पूरा पानी बोतल टा बेले बेले सोडियम हाइड्रोक्साइड बोतल खोलला बेल को से आउ सॉलिड पेलेट्स नाही पूरा सॉल्यूशन हे गेलानी किछि दिन पर जदि तमे सब बेले ताको मेलामेली करियो तो जोडा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बाय वेइंग मेथड रे करि हबो सेटा बेस पई नेचर देइछि किछि दि चारटा एसिड पई दि चारटा देइछि ताकू करिकरी रखा जाय थाए सी मास मास धर रहइबो ताकू अछि लिखाइ छि स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ सक्सिनिक एसिड n/10 कि एक्जेक्टली से 1.01 into n/10 करिकरी रखि छि म ताकू आनिकरी टाइट्रेशन करो ए जो अप्रोक्सीमेटली सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन थिला n/10 जोटा अप्रोक्सीमेटली तो v1n1 v2n2 करिकरी तमे एक्जेक्टली बाहर करो से दिन हे जाइछि धर 0.87 n/10 हे छि बा 0.087 n हे जाइछि तो संगे संग तापरे तबर इन्वॉल्व टाइट्रेशन तमे एक्चुअली सोडियम हाइड्रोक्साइड नै आ गुटे कोन एनालिसिस करिया पे किंतु सोडियम हाइड्रोक्साइड जेहेतु स्टैंडर्ड सॉल्यूशन नुए तेणु इमीडिएटली बिफोर द एक्सपेरिमेंट तमे स्टैंडर्डाइज करिवो बाय यूजिंग ए स्टैंडर्ड सॉल्यूशन वेट स्टैंडर्ड जोटा ताकू कहंती प्राइमरी स्टैंडर्ड सो some compounds are stable and we can prepare solutions of these with exact concentration by weighing method these are called primary standards तारो एग्जांपल मोर देइछि आज फाइल टा दे देबी तो ताकू यूज करिकरी v1n2 n1 करिकरी v1n1 = v2n2 करिकरी जोटा प्राइमरी स्टैंडर्ड नुहे तारो ताकू स्टैंडर्डाइज करो बा तारो एग्जैक्ट कंसंट्रेशन बाहर करो एटी उडे दियाइछि v1n1 v2n2 करिकरी ए सॉल्यूशन रो एग्जैक्ट कंसंट्रेशन बाहर जेते ऑक्सैलिक एसिड निहाइछि एथरको नॉट सक्सिनिक एसिड नो सेटा वेट स्टैंडर्ड गोटे तारो एतिक ग्राम पर लीटर देइछि ग्राम पर लीटर देइछि माने तर इक्विवेलेंट मास रे डिवाइड कर देले 45 होस तर इक्विवेलेंट मास हमें 9 कहिथिली 90 होस तर मोलर मास एन फैक्टर होछि 2
So 45 gram. So 4.5 रे 45 भरेले इटा 0.1 n. So 25 into 0.1 is equal to 32.5 into केते से केते बाहरला केते एतिक तेणु सोडियम हाइड्रोक्साइड जो बेकारिया सॉल्यूशन थिला तार एग्जैक्ट कंसंट्रेशन से दिन पई भारी होला एतिक ताकू यूज करिकरी गोटे सल्फ्यूरिक एसिड गोटे अननोन सल्फ्यूरिक एसिड कि तुमको गोटे परीक्षा करिया को एग्जामिनर देइची गोटे सल्फ्यूरिक एसिड सी जानिची तुम्हें बाहर करो तार कंसंट्रेशन केते तमे जो स्टैंडर्डाइज कलो तार कंसंट्रेशन जानिलो सेटा फोपाडी देलो सेही एसिड को नहीं करी वर्तमान एटा नियो जो सल्फ्यूरिक एसिड देइचंती ताकू नियो ब्यूरेट रे तुम्हें 25 ml पिपेट नहीं करी ताकू सेही जो स्टैंडर्डाइज जो कलो अल्काली को सेही अल्काली तमे प्रिपेयर करना अल्काली थिला अप्रोक्सीमेट स्ट्रेंथ रो थिला ताकू स्टैंडर्डाइज कलो सिथि 25 ml पिपेट रे नेलो एवं ब्यूरेट रे रखिलो सल्फ्यूरिक एसिड of unknown concentration then end point पाइलो then v1 n1 v2 n2 करिकरी से सल्फ्यूरिक एसिड रो नॉर्मलिटी भाला 0.0952 और हीरो मार्क का हिसाब रे लिखले 0.952 n/10 ताको ग्राम्स पर लीटर कन्वर्ट कले एथरे सल्फ्यूरिक एसिड रो यू नो नॉर्मलिटी होची 49 रे गुणिले यू कैन गेट इट इन ग्राम्स पर लीटर 4.664 ग्राम पर लीटर शुण जो मैंने अंक टिके स्ट्रंग ये मत लगुव ये कौन युवा किंतु जो मैंने अंक स्ट्रंग नुहे से माने टिके हचपच होतुव रेज योर हैंड्स हु आर एबल टू यू नो टेक इट एज इट इज कमिंग फ्रॉम माय माउथ रेज योर हैंड्स बी ऑनेस्ट ठीक है कंसंट्रेशन तमर जेमति आमे कंसंट्रेशन पढुनी तमर जेमति कंसंट्रेशन लेवल टाको बढ़ेबा को पड़ियो अदरवाइज ऊपर ऊपर पळेबो आशीष कौन बुझी पारन डिफिकल्ट होची आशीष हर्षिता नहीं सर बुझी होची टिकड़िया सीजल गलानी करी ये हमारा भैया आर यू फेसिंग प्रॉब्लम सर मु डिस्कनेक्ट हेतले साथले ए क्वेश्चन टा बुझी पारलो दिस इज स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ए सॉल्यूशन जो सॉल्यूशन टा वेट स्टैंडर्ड नुए वेइंग मेथड रे ताकू कंसंट्रेशन बाहर करी पारी हबो नै अप्रोक्सीमेटली कर दबो ए जाउ जो अप्रोक्सीमेटली मु नेइथिली 4 ग्राम से कोन 4 ग्राम थिबो से 2.5 थाइ पारे 3.7 थाइ पारे जा भी थाइ पारे पानी गुडा भरती थिबो कोन हिथिबो ताकू रखी दियो अप्रोक्सीमेटली लिख दियो अप्रोक्सीमेटली n/10 की n/5 की जा कर दियो तापरे आमे गुटे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन नबा एसिड रो की स्टैंडर्ड सॉल्यूशन दीटा ना कहिची कोन कहलो यस रुद्र सक्सेनिक एसिड सर सक्सेनिक एसिड और ऑक्सैलिक एसिड सक्सेनिक ऑक्सैलिक एसिड मु जोटे लिस्ट देइची एसिड रो प्राइमरी स्टैंडर्ड हले सक्सेनिक एसिड ऑक्सैलिक एसिड ता लिखिनी पोटेशियम एक्चुअली ऑक्सैलिक एसिड मते देई देइची किंतु ऑक्सैलिक एसिड रो हाइड्रेट ने जाय H2C2 ऊपर डॉट टू वाटर माने 18 दुने 36 से ऐड करियो पड़ियो सेटा किछि होबनी क्रिस्टल टा भारी स्टेबल पानी नहीं ये क्रिस्टल तैयारी है से आउ वाटर नबनी कि लूज करबनी किछि करबनी अनलेस यू हीट इट एंड टू हाई टेंपरेचर सो ऑक्सैलिक एसिड यूजुअली क्रिस्टल निया जाए सेही n फैक्टर टा 2 किंतु इटा एक्चुअली क्रिस्टल निया जाए H2C2 ऊपर डॉट टू वाटर नेले होल 90 युक्त 18 दुने 36 करिकरी 2 रे डिवाइड कले जाय तार बाहरिबो इक्विवेलेंट मास मु सिंपलीफाई करिया पे मु डॉट टू वाटर देनी बेले बेले से कहि देथिबो क्रिस्टल बेली आ गोटे हला पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट शॉर्टकट रे KHP एडा फार्मूला सब जानिबो ऑर्गेनिक रे पोटेशियम हाइड्रोजन आयोडेट एटा इनऑर्गेनिक टा ये माने हले एसिड रो प्राइमरी स्टैंडर्ड ताको वेइंग मेथड रे करि पारिबो बेस रो सोडियम कार्बोनेट आ ऑर्गेनिक रो गोटे निया हिची ट्राई हाइड्रोक्सी मिथाइल अमीनोमिथेन ये दीटा हला और बेस रो स्टैंडर्ड वेइंग मेथड रे करि पारिबो रिडक्स टाइट्रेशन पई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हिसाब रे तीनटा हीरो मार्का ना एटा हो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रे एटा रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सैलेट आयन इज reductant always reductant and potassium bromate is always mostly an oxidant so potassium bromate potassium dichromate oxidizing agent हिसाब रे standard solution तैयारी होबो एवं सोडियम ऑक्सैलेट होचे reducing agent रो standard ए वेइंग मेथड रे करूची आजिकल तो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस मिललानी वेइंग मेथड रे करूची स्टैंडर्ड सॉल्यूशन तैयारी करूची 500 मिलीलीटर या फ्लास्क अवेलेबल मेजरिंग फ्लास्क अवेलेबल एठो ऊपर गार अछि
तमे से अनुसार तमे ओजन करके भाग माप आग कैलकुलेट करदेव से अनुसार धुईरे कि से जो पेपर नहीं बहुत केयरफुली ट्रांसफर करदेव आउ टे ठुकईदेव ठुकईदे कि लगी काले पलैज डिस्टिल वाटर बा सुपर डिस्टिल वाटर कहते कंडक्टिविटी वाटर ऐड करके तुम धीरे धीरे सेक कर लास्ट पॉइंट आसला माने कौन कर वेरी केयरफुली ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड कर मार्क जाके ऐड कर अधिक हो गले किसी करें वेरी केयरफुली ऐड कर ड्रॉपर यूज कर लास्ट मोमेंट रे देन बंद कर दियो तार स्टॉपर टाको भल कर सेक कर होमोजेनियस सॉल्यूशन कर सेठी लिखि दियो n/5 कि n/20 कि n/10 कि m मोलारिटी करूछु m/10 कि m कि कौन जहां भी लिखि दियो तुम्हें मोलारिटी की भल पाए कि नॉर्मलिटी भल पाए दैट इज अप टू यू सर सर सेठरे इथानॉल को मैं व्यवहार करा है हैं सर इथानॉल को मैं व्यवहार करा है इथेनॉल काहे की व्यवहार करा है कोड करा है कि सर ये जो सेकंड डायग्राम था सेट सर ऊपर ओ एटा से इथेनॉल आज्ञा। सॉल्यूशन करा है से ऑक्सालिक एसिड टा पानी रे सॉल्युबिलिटी बहुत कम तो ऑक्सालिक एसिड टा को यूजुअली इथेनॉल रे करा जाए डजंट मैटर आज्ञा ऑक्सालिक एसिड सक्सेनिक एसिड ऑक्सालिक एसिड दे आर मोर सॉल्युबल इन इथेनॉल तेणु से वाटर रे न करी इथेनॉल रे करछि इथेनॉल और पानी मद संगे पानी मिसई कि लोक माने पी जानते ढक ढक तेणु मद एंड पानी दे आर मिक्सेबल इन ऑल प्रोपोर्शन किसी प्रॉब्लम नहीं आज्ञा आज्ञा सर थैंक तो ये सब बात का खेल V1 N1 स्टैंडर्डाइज करा जायछि 5 ml of 18 molar माने concentrated was diluted by distilled water by using गोटे 250 cc मेजरिंग फ्लास्क यूज करके डाइल्यूट कराला 5 मिलीलीटर नियाला गोटे पिपेट साहाଯ୍य एक्जाक्टली 5 मिलीलीटर ट्रांसफर कली गोटे 250 मिलीलीटर फ्लास्क को तापर बाकी तक पानी मिसई सेक करी पानी मिसई सेक करी निश्चय 18 ml रहिबनी जिते गुणा मु डाइल्यूट कली सेते फैक्टर रे हरिले मोलारिटी कमी जीवो तो डाइल्यूट जिते तुम करूच से तुम मोलारिटी करिया दरकार नहीं तुम डाइल्यूशन रे सही लोक थाए तो मोलारिटी मध्य जेतिकी कमिबो नॉर्मलिटी सेति कमिबो डाइल्यूशन फैक्टर सेतिकी तेणु तुम ताकू नॉर्मलिटी कन्वर्ट न कले भी चलेबो सेठी V1 M1 = V2 M2 कले हबो एटा केमिकल रिएक्शन नुए खाली पानी पके कि ताकू पानी चिया करूच कंसंट्रेशन कमउच तेणु तार प्रथम V1 M1 होथिला कोन 5 × 18 नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड पानी जेते पकइले भी कोन नंबर ऑफ मिलीमोल्स इज रिलेटेड टू मास सेटा कोन चेंज हो तेणु फाइनाली मन 250 है 250 × x = 5 × 18 करदे नुआ मोलारिटी बाहर अच्छा किए कहीपर जदि सल्फ्यूरिक एसिड रो मोलारिटी 18 m तार नॉर्मलिटी केते हेथिबो इफ इट इज यूज्ड एज एन एसिड रेज योर हैंड्स 18 m हेथिबो तार मोलारिटी देछि तार नॉर्मलिटी केते हेथिबो इफ इट इज यूज्ड एज एन एसिड वेलकम अन्य माने ट्राई करो हर्षिता आज कौन एमती पछौच आज प्लीज डोंट माइंड गिव योर 101% जति हला हला किंतु बट आई हैव टू डू जस्टिस टू ऑल तुम पे स्लो डाउन कली दिस वाज माय स्लो डाउन ट्रीटमेंट टू द न्यू कमर्स ना अदरवाइज मुझे खाली यूरानियम पिला डकई था ताहले मु तो आरंभ करता गोटे अलग लेवल रु आरंभ करता आउ चेष्टा कर सिजल चेष्टा कर 18 मोलार सल्फ्यूरिक एसिड समान केते नॉर्मल तार n फैक्टर रे गोटे कोन करिवो गुणिवो कि हरिवो कोन करिवो सिजल समिधा कोन करिवो So multiply. हाँ मल्टीप्लाई करिवो ठीक जानिचो कारण नॉर्मलिटी गोटे बड़ नंबर अधिका नंबर जदि नॉर्मलिटी मोलारिटी समान न होला त नॉर्मलिटी बड़ न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ नॉर्मलिटी इज मोर देन मोलारिटी तेणु यार जेहेतु n फैक्टर है 2 एटा बेसिसिटी होची 2 तार रिप्लेसेबल अरे दीटा रिप्लेसेबल हाइड्रोजन अच्छी तेणु 2 रे एटा हला केते n ताले केते n भैया 36 n तेणु V1 N1 कले भी सेया रहइबो इज इक्वल टू 250 × N1 तार नॉर्मलिटी बाहरिबो
V1 এটা গোटे केमिकल रिएक्शन नुह जे नॉर्मलिटी करबा को बाध्य मोलारिटी मध्ये गुणिले सेही मोलारिटी रहइबो सो द न्यू सॉल्यूशन डाइल्यूट कला परे हे जीवो 0.36 m V1 M1 V2 M2 এটা रिएक्शन नुहे डाइल्यूशन प्रॉब्लम एटा किबा के जण कोन करंती ना एटा डाइल्यूशन फैक्टर बाहर करंती 250 रे हरिबे 5 250 रे 5 हरले केते हला 250 डिवाइडेड बाय 5 केते टाइम्स तक डाइल्यूट कले केते रुद्र अरे 250 by 5 केते 50 Sir, times. 50. Sir, 50 times. 50 times dilute kale so 18 रे 50 हरि दियंती so new molarity will be 50 times less than that of old molarity so 80 by 50 कर देले एका जिंस आसीबो 90 by 250 जहा 80 by 50 से नो हो कि नहीं मो Again, sir. 18 by 50 से या 18 एटी 5 रे हरिले 18 5 रे हरिले 50 सो खेलिबे माने टिके जदी अंक एनालिसिस और अंक टिके थिबो तेबे एगुडा सब किछि नो बाएं हाथ का खेल अब ये ऑक्सैलिक एसिड क्रिस्टल देनी जानी कि ऑक्सैलिक एसिड खाली देछि तो सेमती 0.45 ग्राम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड वाज गिवन टू यू along with a 100 milliliter measuring flask and distilled water गोटे बॉटल दियाला जहाँ को जेते आउ 100 मिलीलीटर फ्लास्क दियाला आउ नाही हम लैबोरेटरी 250 मिलीलीटर नाही कि 500 मिलीलीटर नाही कि लीटर क्या नाही what will be the normality and molarity of the 100 ml solution that you prepare एतिकी ग्राम ओजन करके दियाला ओजन माने वस्तुत्व मास मपाई की दियाला 100 मिलीलीटर दियाला सो आमे आउ तो किछि नाही मा यू नो द वॉल्यूम ऑफ द फ्लास्क इज फिक्स्ड 100 ml and mass is fixed 0.45 तार equivalent mass रे हरिले it will give you number of equivalents by volume of solution in ml into 1000 so 0.1 n solution molarity होची तार 2 हरिबो कारण ऑक्सैलिक एसिड रो n फैक्टर भी 2 even if it is an oxidizing agent भी 2 कार्बन टा +3 रु जाईची +4 दीटा पाई total change is 2 so as an reductant I'm sorry as a reductant also n factor is 2 as an acid also when you are titrating and standardizing it is acting as an acid a dibasic acid सेटिफाई मध्य n factor 2 as जतबे reductant हिसाब रे व्यवहार करिवो by reacting with KMnO4 or potassium dichromate or other oxidant solution then its n factor is coincidentally बेले n factor as an oxidant is different from n factor for example S2S जेतबेले ऑक्सीडेंट हबो एवं से S2S रे कन्वर्टेड हबो n फैक्टर हेलानी 8 +6 रु -2 8 of course most of the time it is 2 so SO2 the SO2 माने +6 रु +4 change is 2 so again coincidentally n factor is 2 when it is an oxidant and produces SO2 gas and also as an acid which is dibasic is 2 सर सर से पूर्व क्वेश्चन टा सर आउथरे देखिए ये सर से ऑक्सैलिक एसिड वाला रेस्टर दिन मोलारिटी बाहर करबा नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम्स ताले तो अलगा बाहर सर नंबर ऑफ अरे सर नंबर ऑफ मोल्स होचे 0.1 और वॉल्यूम होचे 100 ml नंबर ऑफ मोल्स होची 0.45 by 90 90 होचार मोलार मास तार n फैक्टर 2 बिली एज एन एसिड सेति पई 45 होची इक्विवेलेंट मास तेटु 45 रे यस टू गेट नॉर्मलिटी यदि कि मोलारिटी बाहर करिवो एथरे 90 रे डिवाइड करिवो सेम आसीबो 0.05 यस सर सो डाइल्यूशन रिलेटेड प्रॉब्लम बहुत इजी v1 m1 इज इक्वल टू v2 m2 करो कि v1 n1 करो n इज इक्वल टू v2 m2 जा कले भी बट गोटे रिएक्शन रे v1 m1 इज इक्वल टू v2 m2 में अप्लाई करि परिबनी because reaction may not take place in molar quantities 1:1:1 नहीं पारे न होबार चांस 99% किंतु इक्विवेलेंस रे हमर तो गीत अछि हमर गीत अछि all chemical reactions take place in equivalent so there is no problem तो एटा करिवो से डाइल्यूशन ऊपर आधारित एटा सब डाइल्यूशन प्रॉब्लम खाली एतिक रेते मिसा हला ताको आउ पानी मिसा हला एते ताहले केते नुवा केते धर एटा गोटे छोटिया करूची डेडिकेटेड टू नॉन यूरानियम गाइस कला परे आमे भितर को जिबा डेडिकेटेड टू नॉन यूरानियम गाइस who have already become who have been uranized
एटा गोटे छोटिया गोटे करवा तापर आमे कला बेलू मुंड एमती एमती मुंड करवा आ टिके परे किलिमांजारो जीवा ना किलिमांजारो ट्रेकिंग करवा 0.84 ग्राम of an acid is dissolved or mass दे दीजिए is dissolved in 200 ml water. Hopefully से सॉल्यूशन रो मध्य वॉल्यूम 200 मिलीलीटर रहिबो काना ये 0.84 ग्राम से भितर कोठी लुचि जीवो जदि अलगा ही थांता वॉल्यूम से डेंसिटी दे थांता एठी भाबिबो जे सॉल्यूशन रो वॉल्यूम मध्य 200 मिलीलीटर हबो एंड 25 मिलीलीटर ऑफ दिस सॉल्यूशन एटा हला स्टॉक सॉल्यूशन 200 मिलीलीटर मेजरिंग फ्लास्क रे एटा कोन चित्र करछु मेजरिंग फ्लास्क रे दाग थाए एट लिखा है 200 ml ऐड करी ग्राम ओजन करी ऐड करा पानी मिसई करी सेक करी 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 ए जाके नियाला लोअर मेनिस्कस एट रहला सो ताको भलो करी सेक कराला ढक्कन बंद करी करी देन एटी लेखा लेखाला स्टॉक सॉल्यूशन एसिड रो ना दिया ही नहीं तेणु तुम तार मोलारिटी नॉर्मलिटी लिखि परिबो स्टॉक सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड एसिड रो ना भी कहनी पर हम सेटा बाहर करिया कहिछि सेई थ्रू पिपेट साहाय्य रे आनी 25 मिलीलीटरिया पिपेट साहाय्य ताकू ट्रांसफर कर गोटे कोनिकल फ्लास्क को सही सॉल्यूशन टा ओनली 25 ml तापरे ब्यूरेट नेइकरी तार सोडियम हाइड्रोक्साइड टा वर्तमान ब्यूरेट रे नियो जोटा ऑलरेडी स्टैंडर्डाइज्ड आउ जने किए स्टैंडर्डाइज करिस कि तुमे ताकू स्टैंडर्डाइज ऑलरेडी करिसो तार नॉर्मलिटी होची n/10 डेसी नॉर्मल एवं टाइट्रेशन रू लागिला एक्जेक्टली 14 ml of n/10 NaOH lagila to completely neutralize 25 ml of XN acid solution because we do not know the normality of the stock solution. ताकू आमे बाहर करबा को जाउचे बाय टाइट्रेशन एक्सपेरिमेंट सो आमे 25 ml नहीं थिलो एसिड सॉल्यूशन जहार कंसंट्रेशन आमे जानिने नॉर्मलिटी आमे जानिने सो 25 into x is equal to 14 into 1/10 करी बाहर कले एक्स्ट्रा केते हला मिस त्रिपाठी ठीक चलछि तो Yes, sir. गाड़ी चली छी गाड़ी Yes. चालू गाड़ी पुणी मोमेंटम नहीं जीवनी कहार केते बेले गाड़ी मोमेंटम निये तार किछि कहि परिबनि किंतु हमर दरकार धैर्य धैर्य हले मोमेंटम आसी सर 0.056 बाबा आयुष रो माने टोन टा पूरा अमिताभ बच्चन टोन 0.0 0 पॉइंट केते 056 0.056 01 056 एति की आयुष केते 0.05 यस 6 छिड़ी गला आउ तापर किछ नाही नहीं सर नहीं सर एति की n हला अच्छा मोर गोटे क्वेश्चन हाथ टेकिबो कहबोनी समस्त को जदि 25 मिलीलीटर जो आमे पिपेट रे आनी थिले ए स्टॉक सॉल्यूशन रु तार नॉर्मलिटी बाहर कले v1 n1 v2 n2 करी करी 0.056 n जदि हला ताले स्टॉक सॉल्यूशन जो 200 ml सॉल्यूशन ओरिजिनल स्टॉक सॉल्यूशन जो थिला तार नॉर्मलिटी केते रेज योर हैंड्स सेथरु 25 ml आनी थिले आनी करी टाइट्रेशन कले बाहरला 0.056 n तेणु से स्टॉक सॉल्यूशन रो नॉर्मलिटी केते जोड़िए हाथ उठी हाथ उठा भाव भूल ही जाऊ ये कौन सी बड़ी बात है भूल ही जावाटा इज वेरी इनएविटेबल ह्यूमन बीइंग्स माइंड हर्षिता हर्षिता अथ ना नहीं रिटायर करिगलनी प्रणव कौन एम सोई पड़लनी कि प्रणव प्रणव यस सर सही न तो कुह प्रणव ट्राई कलो सर 0.8 तामान तुमे कहउछ जदि 25 ml सॉल्यूशन रो जो बाहर कले तार जो स्टॉक सॉल्यूशन रो हम आनी थिले 25 ml तार जदि सॉल्यूशन रो कंसंट्रेशन हला एते की ताहले ओरिजिनल स्टॉक सॉल्यूशन जो 200 मिलीलीटर स्टॉक सॉल्यूशन तार कंसंट्रेशन 0.8 हबो और कोन गुण लगी डाइल्यूशन फैक्टर गुण लगी 25 208 गुण लगी
ना कौन केमती 0.8 केमती हला ओके सीजल तुम्हें कौन भाबुच व्हाट आर यू थिंकिंग सीजल आर यू देयर आर यू एक्जिस्टिंग सीजल सीजल इज नॉट एक्जिस्टिंग सर कौन कहले सुबिलन तुम्हें कौन भाबुच एई तार स्टॉक सॉल्यूशन रो केते हबो हेलो सर सुबुनी स्टॉक सॉल्यूशन रो नॉर्मालिटी केते हबो सर नाम सर मते आपन वॉइस क्लियर आसुनी वेरी गुड ओके ओके ताले सुनो बर्तन ओके आमे आयुष लास्ट को हाथ टेकी थिला आयुष कहलो सर 0.056 से कहूच रुद्र से कहूच आज्ञा सर भैया यस सर प्रिसाइजली सबुठु मजा जिनस हला जे एठी तुमे तमर माइंड काम कला नहीं रेस्ट ऑफ द गाइज अच्छा सुनो तुमे समुद्र भितरे पूरी समुद्र भितरे पशिच नोलिया साहाଯ୍ୟରେ भितरे पशिच गाधेइबो गाधो गाधो पाटी भितरे समुद्र पानी पशिगला ढोकिनी भितर को चली गला चाखी देल जेतिकी तुमको लुणिया लागिला सेतरे लुणर कंसंट्रेशन जेतिकी अछि तू जानिलो भाग माप तार जेतिकी भाग माप तुमे कोन कलो महोदधी पुरी महोदधी रु किछि समुद्र पानी गोटे बोतल रे संग्रह करिकी कटक आनिलो कि भुवनेश्वर आनिलो कि पुरी आनिलो कि जाजपुर आनिला कि हमर प्रणव सापर घरे आसिकरी गाधुआ पदा करी ता परदिन पुणी ढोके पीला तार कोन एका तार से जेतिकी जेतिकी लुणिया लागिथिला सेतिकी लुणिया लागिबो ना कम लागिबो ना बेसी लागिबो अरे से जेतिकी लुणिया सर एका लगे जेतिकी लुणिया ता पाटी को लागिथिला जेतिकी कड़ा लुणिया कि फिका लुणिया जेतिकी लागिथिला सेतिकी लागिबो ना नहीं तेणु एटा सेई स्टॉक सॉल्यूशन रु धर चीनी पानी गोटे करिछ गोटे सिरप करिछ गोटे बय सेतिरु टिके ना को पीले तार कंसंट्रेशन जेतिकी भाग माप जेतिकी एडे बड़ स्टॉक सॉल्यूशन रे मध्ये सेई भाग माप सेतिकी एटा स्टॉक सॉल्यूशन अनलेस अनलेस तमे कोन करिछ एटा ढक्कन टाको खोला करके ताको छाड़ देइछ पानी गुडा उड़ी जाइछ ए कंसंट्रेशन बढ़ी जाइछ तापर कबे बहुत मीठा लागिला लुणिया बढ़ी गला सी नो तार ढक्कन बंद करिवो ढक्कन बंद करिवो जो भाग माप समुद्र रे थिला वर्तमान सेई भाग माप अछि तार वॉल्यूम टा कमिले कोन हो सॉल्यूशन रो भाग माप सेया अछि अलाउ करो नहीं कौन सी पानी को इवापोरेट करिया पई देन कंसंट्रेशन विल रिमेन द सेम तेणु एटार जो 0.056 बाहरला एंटायर स्टॉक सॉल्यूशन रो मध्य नॉर्मालिटी बा अन्य जे कौन सी कंसंट्रेशन सेतिकी बुझिलो के बुझि पारलो हाथ टेको के बुझि पारलो हाथ टेको अरे इनफैक्ट समिता बुझिलो नी हां आशीष सर सीजल कहबो मु सुनी पारुनी आपन वॉइस सीजल सीजल नाही सीजल गॉन ओके अरे सर हम हां सर सर मु बुझले रे सर किंतु आ गोटे कथा से सर जदि हम से दरु कम ने बस ताले हम तको कोन वन इक्विवेलेंस कहि परिबा जदि वन इक्विवेलेंस जदि वन इक्विवेलेंस सॉल्यूशन थियो माने से माने एसिड थियो जदि वन इक्विवेलेंस सर ताले से वन इक्विवेलेंस बेस को न्यूट्रलाइज करथिबो सेकंड जदि हम कम आनी बस ताले तो से वन इक्विवेलेंस को न्यूट्रलाइज करि परिबोनी ना भैया जी सुनिए भैया जी आमे व्हेनेवर यू परफॉर्म ऑन ए टाइट्रेशन एक्सपेरिमेंट आमे गोटे पिपेट साहाଯ୍ୟରେ ड्रॉ करबा गोटे स्टॉक सॉल्यूशन रु 3 थर 4 थर करबा कंकड़ा खाइबा माने कंकड़ा रीडिंग तीनटा दरकार 5-6 थर हमकु दरकार करि पारे 25 सेति पे सब बेले टाइट्रेशन एक्सपेरिमेंट रे गोटे स्टॉक सॉल्यूशन करा जाय मिनिमम 200-250 एमती करा जाय सेही थ्रू थरे आनलो सेही सॉल्यूशन को आउथरे आनलो सो दैट आमे तीनटा कंकड़ा रीडिंग पाई करी आमे डिक्लेयर कर देलु जे नाही एति की खाइला 25 मिलीलीटर को 14 मिलीलीटर ऑफ NaOH खाइला से 25 3-4 थर आने पड़िबो ना सेठी 14 गोटे जगह आसला 14.1 गोटे जगह 14.2 एमती फाइनली 14 आसला सेटा हला कंकड़ा रीडिंग सेति पई स्टॉक सॉल्यूशन रो कंसंट्रेशन मेजरमेंट करिया पई स्टॉक टुका अधिका कर दिया जाए एवं सेथरो अल्प नै करी करा जाए आ टाइट्रेशन कला बेले सब बेले देखा जाए जे दीटा पार्टनर कर कंसंट्रेशन कंपैरेबल वाइडली डिफरेंट नो धर टाइट्रांट रो कंसंट्रेशन 1m एटार m/10
n/10 अरे 1n ना हबनी धर मु गोटे नकनकिया धेड़ सांगरे गोटे 90 kg रो गोटे हुष्ट पुष्ट युवक सांगरे मु करदेवी रेसलिंग इंटरनेशनल नियम ना 50 kg सांगरे 50 kg 60 kg सांगरे 60 kg तेणु यहाँ जब m/10 n/10 हो तारटा पाखापाखि n/10 हो तेणु लार्ज डिफरेंस इन कंसंट्रेशन हेले कौन हम तार गोटे ड्रॉप जो फाइनल ऐड करिवो यार बहुत लेवल माने न्यूट्रलाइज करी आउरी आगो को बहुत पड़ी जाइथिबो किंतु कंसंट्रेशन समान थिले गोटे ड्रॉप एक्स्ट्रा हेले हाफ ड्रॉप लागिवो करियो को आउ हाफ ड्रॉप एक्सेस जो लागिवो जोटा हमें कलर इंडिकेशन करिवो सीए किछि नु ताको हमें नेग्लेक्ट करिवा विशेष किछि नुहे किंतु जदि कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन संगे डाइल्यूट सॉल्यूशन रो टाइट्रेशन करिवो V1N1 V2N2 करिवो से एंड पॉइंट एरोनियस हबो जदि वो गोटे ड्रॉप रे हला जदि वो 3 कंकड़ा खाइलो फिर भी दैट इज नॉट ए गुड टाइट्रेशन। अच्छा भैया जी हम बाद में डिस्कस करेंगे अन्य मानकर किछि अछि कि आयुष कोन पचारिबो ना हाथ टेकी के रखिछ बस आकु जिबा आकु जिबा आकु जिबा एटा हला किलिमांजारो ट्रेकिंग स्टार्ट्स एइठरे हमें देखिबा सैंपल को एनालिसिस करबा बाय बैक टाइट्रेशन मेथड। अच्छा आउ गोटे जिनस तुमको सेथरे कहली कि नहीं जान नहीं बिकॉज आई एम एटा तो सॉरी आगु ना एटा नो एटा हम करथिल ना ना एटा नो एटा करथिले ना एटा करनो बोले वो फाइल रो करथिले हां एटा तो करथिले ना एटा करथिले कोठू मु नहीं के आसली डाइल्यूशन रिलेटेड प्रॉब्लम तो हम कर देथिले तापरे टंग 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 आउ को फाइल रो करथिले तापर किलिमांजारो ओ छाड़ो एइथरे अछि ना नहीं सेथरे मु देखि दोछ टिया आयोडीमेट्री टा अछि ना नहीं खाली देखि दोछ थिबो एट थिबो अच्छी अच्छी आयोडीमेट्री अच्छी ओके एथरे सब अच्छी धर देखो बैक टाइट्रेशन कौन ये प्रॉब्लम टा कले तुम जानी पारिबो मु एकाथरे एटा को जाउची ना ये सहजाटा ए लाइमस्टोन को जीवा ना ए छाड़ो तरतर हबानी तरतर हेले पछे जेति करिया ना तरतर हबानी देखो बैक टाइट्रेशन टा कौन तुम्हें गोटे रिएक्शन कल गोटे सैंपल तुमको एनालाइज कराला गोटे मिनरल लाइमस्टोन गोटे कोठू पाइलो तार परसेंटेज ऑफ प्यूरिटी बाहर करिया को पड़ला किंतु एटार सॉल्यूशन करि पारलनी लाइमस्टोन कंटेन्स लॉट ऑफ इम्प्यूरिटीज तुम करि पारलनी तुम कोन कलो रिएक्शन करेलो किंतु गोटे एक्सेस ऑफ ए रिएक्टेंट रे रिएक्शन कलो 25 मिलीलीटर ऑफ n/10 HCl जानि कि तुम एक्सेस नेलो सो दैट किछि एसिड बळी पडू लाइमस्टोन रे थिबा समस्त कार्बन डाइऑक्साइड सॉरी कैल्शियम कार्बोनेट लेट दी कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट इन लाइमस्टोन टोटली रिएक्ट बट दी अदर रिएक्टेंट HCl टू रिमेन इन एक्सेस ताकू आमे चालो पके टाइट्रेशन कर धरिबा ताकू आमे 100 मिलीलीटर को डाइल्यूशन कले कारण हमको 3 थर 10 ml पछे हो पछे पिपेट रे 3-4 थर करिया पड़िबो तेनु 25 ml एटा तो मास 25 ml को आमे 4 गुड़ा डाइल्यूट करी 100 मिलीलीटर मेजरिंग फ्लास्क रे 100 मिलीलीटर स्टॉक सॉल्यूशन तयारी करि देलु सेही थरु 25 3 थर 4 थर हेई परिबो 25 मिलीलीटर ऑफ दिस डाइल्यूटेड सॉल्यूशन रिक्वायर्ड 5 ml ऑफ N/50 NaOH फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इन द लाइमस्टोन देखो आमे पछाडू जिबा ता ना होची बैक टाइट्रेशन कारण डायरेक्ट सैंपल सॉल्यूशन तयारी हेनी सैंपल टा रिएक्ट कर दिया हला गोटे तार रिएक्टेंट संगरे एसिड संगरे से एसिड जो बळका बळिला ताकू हमें धरिले केते बळिला हमें जदी केते बळिला जानि गले देन वी कैन आल्सो कैलकुलेट हाउ मच कंज्यूम
जति नहीं थिले माइनस केते बळिला माइनस कर देले केते कंज्यूम हैला आमे जानि परिबा एवं जेतिकी कंज्यूम हैला HCl सेतिकी मिली इक्विवेलेंट थिबो लाइमस्टोन सॉरी कैल्शियम कार्बोनेट because all chemical reactions take place in equivalent हैला एठी कोन हैला 0.2 ग्राम जो लाइमस्टोन एटा गोटे इम्प्योर सैंपल यार किछि नाही एथर किछि आर रोल लास्ट को अछि एथरे थाए कैल्शियम कार्बोनेट रो गोटे सैंपल टे सेटा अच्छा अच्छा वर्तमान कहलो देखिबा इनिशियली जो आमे ताको पकेले रिएक्शन करिया टाइट्रेशन नो रिएक्शन करिया को सेते केते मिलीमोल बा मिली इक्विवेलेंट आमे तो एमईक्यू लोक नॉर्मलिटी अनुसार करिबा केते एमईक्यू मिली इक्विवेलेंट HCl निया जाइथिला MEQ of HCl originally used consumed no originally used केते तार वॉल्यूम इनटू नॉर्मलिटी 25 into 1/10 केते 2.5 2.5 milli 2.5 मिली इक्विवेलेंट HCl निया जाइथिला किंतु आमे रिएक्शन कला परे जो एक्सेस HCl रहिला से बहुत डाइल्यूट हे जाइथिबो कारण अधिकांश कैल्शियम कार्बोनेट खाइ गला ताकू आमे 100 मिलीलीटर कले ए 100 मिलीलीटर स्टॉक सॉल्यूशन चला टाइट्रेशन करियो लिखि दियो 100 ml स्टॉक सॉल्यूशन ऑफ डाइल्यूटेड एसिड काई डाइल्यूट एसिड जेतरे कैल्शियम कार्बोनेट सब खाइ जाइछि तार टाइट्रेशन हला V1N1 into V2 एटा बैक टाइट्रेशन आमे कले एठी पछाडू V1N1 is equal to V2N2 करे स्टॉक सॉल्यूशन रो हम नॉर्मलिटी पाई गले दैट इज द नॉर्मलिटी ऑफ द एंटायर सॉल्यूशन सो 25 into x स्टॉक सॉल्यूशन रो हम 25 मिलीलीटर लेखा नेले 25 into x is equal to V2N2 केते खाइला तापे गोटे बेस स्टैंडर्ड अल्काली स्टैंडर्ड एटा ऑलरेडी स्टैंडर्डाइज के अछि 5 ml खाइला 1/50 सो 5 into 1/50 ताले x केते भारला x केते भारला सर 0.0004 x by 1/250 ओ बाबा 0. सर 0.004 एतिकी n से ए जो concentration बाहरिला is it the concentration of only 25 ml which has been drawn or the entire 100 ml सर एंटायर 100 ml entire 100 ml Entire 100 ml. so the stock solution diluted stock solution acid रो normality हला 0.004 n ताले मु पचारिबि जदि स्टॉक सॉल्यूशन रे केते मिली इक्विवेलेंट एसिड एक्सेस अछि MEQ ऑफ एक्सेस एसिड इन द स्टॉक सॉल्यूशन इनटू तार तार टोटल वॉल्यूम इनटू तार नॉर्मलिटी केते टोटल वॉल्यूम अछि 100 स्टॉक सॉल्यूशन रो नबो एटा भात हांडी रे गोटे नेगिरि चिपुथिले हेला सु गलानी ताको उद्देश्य होछि स्टॉक सॉल्यूशन रो कंसंट्रेशन पाइबा से सरी गलानी एनीवे हम तो 100 ml स्टॉक सॉल्यूशन करथिलु तो 100 इनटू तार नॉर्मलिटी भारछि 0.004 ताले केते बळी छि ताले केते बळी थिला 0.4 केते एसिड बळी थिला बोली हम ताको धरिलु जाल पके करी बैक सर टाइट 0.4 सर 0.4 4 MEQ एक्सेस एसिड बळी थिला हमें एसिड केते नेइथिलु मूळुरु कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्शन करिवा पूर्वरु 2.5 milli सर 2.5 एटा होची एक्सेस तबे MEQ ऑफ एसिड कंज्यूम्ड बाय कैल्शियम कार्बोनेट ऑफ लाइमस्टोन consumed by calcium carbonate of limestone केते हो बताले is equal to 2.1 is equal to 2.5 minus 0.4 is equal to 2.1 हैला ता माने that is same as 2.1 MEQ of calcium carbonate भी थिला कारण all is well oh गायत्री मैडम नमस्कार से पचारचंती just deca and centi mean same no deca is something different centi deci no we are talking of deca madam पचारचंती deca centi सेंटीमीटर ना मीटर रो 100 भाग रु भागे डेसीमीटर 10 भाग रु भागे डेका कौन डेका कौन क्यों
सर 10 मीटर। सर 10 मीटर। यस डेका माने 10 मैडम आउ सेंटीमीटर माने 1/100 नहीं यस यस सर। सेंटी माने 1/100 आउ डेका माने 10 डेसी माने 1/10 डेसी डेका होची 10 ठीक अछि मु ठीक कहूची ना बालका बालिका माने यस सर। यस सर वाह यस सर। ओके नाउ जेहेतु आमर स्लोगान होची ऑल केमिकल रिएक्शंस टेक्स प्लेस इन इक्विवेलेंट ताले कैल्शियम कार्बोनेट मध्य प्योर कैल्शियम कार्बोनेट से लाइमस्टोन रे एतिकी इक्विवेलेंट थिबो ताले मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट केते ना 2.1 आगो मिली को मारो मर्डर करो मर्डर वेपन तमे होची मर्डर वेपन होची 1000 रे हर किबा 10 टू द पावर -3 रे गुण इनटू इक्विवेलेंट को मास करिया गले इक्विवेलेंट मास रे मल्टीप्लाई करो के कहि परिबो कैल्शियम कार्बोनेट रो n फैक्टर केते तार मोलार मास केते तार इक्विवेलेंट मास केते कैल्शियम कार्बोनेट रो मोलार मास होची 40 + 12 + 48 समान सेंचुरी हेले इक्विवेलेंट मास केते हबो 100 सर बाई 50 2 बिकॉज एटा गोटे सॉल्ट आकार रे काम करूची तेणु यार टोटल पॉजिटिव चार्ज होची +2 नेगेटिव चार्ज भी +2 आमे देखिचे सॉल्ट मेटाथेसिस रिएक्शन रे टोटल पॉजिटिव चार्ज किमा टोटल नेगेटिव चार्ज सो 2 रे डिवाइड करले 50 होची कैल्शियम कार्बोनेट रो इक्विवेलेंट मास सो 50 रे गुणिबो कारण एटा नॉर्मालिटी मेथड रे करिछ सो 50 रे गुणिले केते आसुची केते आसिला ए गोटे से हरिला एठी 5 रे हरले 20 20 रे हरले केते हला सर 0.105 एतिक ग्राम प्योर कैल्शियम कार्बोनेट अच्छी किंतु लाइमस्टोन जो निया तार मास होची 0.2 खाद्य मिसा इंप्यूरिटी मिसा देयरफॉर परसेंटेज ऑफ प्यूरिटी हमें बाहर कर देले केते परसेंटेज ऑफ प्यूरिटी इज इक्वल टू 0.105 बाय 0.2 into 100 केते परसेंट हैला 50 केते परसेंट हो बोधे अरे केते परसेंट हैला 52.5 2.5 अच्छा आउ गोटे सेमती प्रॉब्लम केते इजीली तमे करि परिबो देखो हाउ इजीली यू कैन डू वंस यू अंडरस्टैंड इट एटा एट सेठी जागा हबनी एठी कोन अनलिमिटेड को हमें पढ़े परिबा या परे मु तुमको क्वालिटेटिवली बुझे देबी आउ ये करिबिनी कोन एटा किलमानजारो अच्छी आउ जोड़ाक अच्छी जोड़ाक सब बुझीगले फटकिन करदब किंतु एटा बैक टाइट्रेशन कॉन्सेप्टटा बुझिबो आउ तापरे मु कहबी काहे कि मु मोलारिटी को भल पाए कारण एटा सिंगल रिएक्शन पई समान अछि तुम जो सक्सेसिव रिएक्शन 3-4टा रिएक्शन गोटा पर गोटा करी आसुच तुमे जो लैडर रे तळ आडू बैक टाइट्रेशन करी ऊपर को बुझिबो बापांक बापा थिले जणे मांकड़ हमर गोटे अक्षय मंत्र गीत अछि सेमती ही परिबन इक्विवेलेंट मेथड रे तुमे जदी क्लाइम करिवो एटा एतिक एक्स इक्विवेलेंट एला माने ता एटा ए देथिबो सी जेछि इठु आसी सेटा मध्ये एक्स इक्विवेलेंट हेतिबो सेमती कहि होबनी काहे कि एका सब्सटेंस धरो आयरन आयरन गोटे रिएक्शन रे से रिडक्स रिएक्शन रे आयरन टा 0 रु +2 को आसी तार n फैक्टर हैला 2 सेठी इक्विवेलेंट मास हैला 56/2 किंतु आ गोटे से फेरस आयन को ऑक्सीडेंट हिसाब रे यूज कराला जोटा फेरस टा फेरिक हेछि सेठी सेठी n फैक्टर होछि 1 तेणु तुम जदि बापा को देखि आयरन पंत पड़िल तापर भूल हम n फैक्टर को तुम आइदर 1 धरिबो कि 2 धरिबो मन इच्छा करिवो सेकेंड रे तुम n फैक्टर 1 थिला प्रथम रे n फैक्टर 2 थिला तुम प्रथम जेहेतु हैंडल करछ 2 धरिबो किंतु मझरे 1 हे गेलानी भूल उत्तर बाहरिबो आइदर जो टाइट्रेशन टा कल सेठी तुम नॉर्मलिटी यूज करिकरी बाहर कर दियो ताको मोल को कन्वर्ट कर दियो n फैक्टर रे ताको डिवाइड करिकरी नंबर ऑफ मोल्स कर दियो मिली मोल्स कर दियो जेमती मोलारिटी को पाइबा पे हेले नॉर्मलिटी रु n फैक्टर रे हर सेमती नंबर ऑफ मिली मोल्स पाइबा पई नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स रे n फैक्टर डिवाइड करे नंबर ऑफ मिली मोल्स मिली देन स्टोकियोमेट्री काम कर हेले पळे आस तेणु बहुत गुड़ाक कॉम्प्लिकेटेड सक्सेसिव रिएक्शंस गुड़ाक इक्विवेलेंट मेथड रे बेले बेले फेल मारिबार चांस बहुत किंतु तमे मोलारिटी मेथड रे कले गोटा पर गोटा करि करि जाथिबो तार जहा हो तम स्टोकियोमेट्री हम बैलेंस करबा से अनुसार हम बाहर कर देले सब ठीक हे जिवो देखो एटा टी कल
1.6 gram of an impure sample of ammonium sulfate was boiled with an excess of caustic soda. देखो एठी 1.6 ग्राम ammonium sulfate नियागला मु गोटे कर दूची एटा impure एटा करहला excess NaOH solution रे करहला हिट करहला एठी केते नियाला दिए कराहिनी तामाने आमे अमोनियम सल्फेट को आमे जानि हमर लॉजिक अछि एनी अमोनियम संगे एनी बेस हिट कला माने अमोनिया बाहरिबो सो अमोनियम सल्फेट रे जेते अमोनिया थिला ऑल नाइट्रोजन अमोनिया नाइट्रोजन तो नो नाइट्रोजन एलिमेंट इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया बाहरि आसिबो तामाने आमे जेते की इक्विवेलेंट थिला अमोनियम सल्फेट सेति की इक्विवेलेंट आमे अमोनिया कर देले अमोनिया सेटा को अमोनिया जो बाहरला सबुतक डिसॉल्व कले एटा भाग माप कर नेले एक्सेस सल्फ्यूरिक एसिड 300 ml of n/5 सल्फ्यूरिक एसिड रे डिसॉल्व कले से पुणी अमोनियम सल्फेट हे गला किंतु हेला परे जो एक्सेस सल्फ्यूरिक एसिड रहिला यार किछि रोल नाही जो एक्सेस सल्फ्यूरिक एसिड रहिला डाइल्यूटेड हे गला कारण सब अधिकांश खाई गला कि ना अमोनिया आउ जो रहिला ताकू आमे जाल पकई करी धरिबा बैक टाइट्रेशन एठू आरंभ करबा एक्सेस सल्फ्यूरिक एसिड को प्रथमे आगो ये 300 ml नियाइथिला ताकू आउ 200 मिलीलीटर नेई गोटे 500 मिलीलीटर या मेजरिंग फ्लास्क रे ताकू 500 ml कराहाला बाय डिस्टिल वाटर तो एटा को कराहाला 500 मिलीलीटर स्टॉक सॉल्यूशन कराहाला सॉल्यूशन कंटेनिंग डाइल्यूटेड एसिड सल्फ्यूरिक एसिड सेइठू टाइट्रेशन एक्सपेरिमेंट कराहाला भात हांडी रु 3-4 थर नहीं चिपी थरे चिपिले हबनी 2-3 थर चिपी करी फाइनली कराहाला सेइथरु 20 ml of this solution required 15 ml of n/10 solution of NaOH for complete neutralization. So एठी हमें कौन करिवे ना 20 ml of this solution required 15 ml of n/10 NaOH. चलो बर्तमान चलो बैक टाइट्रेशन आरंभ करता पर पचारची फाइंड द परसेंटेज ऑफ प्यूरिटी ऑफ द ओरिजिनल सैंपल तो पछाडू जीवा बैक टाइट्रेशन करबा बर्तमान V1 N1 V2 N2 करके जना गला 500 मिलीलीटर स्टॉक सॉल्यूशन रो डाइल्यूटेड सॉल्यूशन रो जो एसिड रो नॉर्मलिटी केते सेही नॉर्मलिटी संगे 500 गुणी देले एंटायर जना पड़ जीवो केते MEQ एक्सेस एसिड थिला पूरा हमें MEQ को पड़ी गले वॉल्यूम को बाईपास कर देले केतेक लोक वॉल्यूम रे काम करिया को ट्रेन करथि I never recommend for an IIT advanced as aspirant to handle such volumetric problem by volume method. Volume को तुम्हें मिली इक्विवेलेंट या मिली मोल्स को नहीं गले आउ वॉल्यूम टा बाईपास हे तुम्हें आराम रे तो कहि परिबो हमें ओरिजिनली केते नहीं थिले ना 300 into 1/5 एति के नहीं थिले एति को माइनस कर देले केते खाइला अमोनिया केते सल्फ्यूरिक एसिड अमोनिया खाइला तमे सेति के MEQ थिला अमोनिया सेति के MEQ थिला अमोनियम सल्फेट मजा जिनस होची कोन एथरे यू नो कोन से चेंज होनी से अमोनिया रु एडा सब मेटाथिसिस रिएक्शन तेणु एडा सब केही रिडॉक्स रिएक्शन नोहे तेणु सेतिरे तुमे बापा जाई परिबो किछि नाही असुविधा किछि नाही तो अमोनिया जति की थिला अमोनियम सल्फेट भी सेति की मिली इक्विवेलेंट थिला तर मास को कन्वर्ट करिवो मिली को मर्डर वेपन रे मारिबो तापरे अमोनियम सल्फेट रे इक्विवेलेंट मास रे गुणी चलो करबा चलो बैक टाइट्रेशन कलो को 20 into x is equal to 15 into 1/10 ताले स्टॉक Sir. सॉल्यूशन मोलारिटी तो केते 0.075 मिली 0.075 0.07 0.75 एतिकी आଜ୍ଞा n सेटा एंटायर 500 ml स्टॉक सॉल्यूशन रो मोलारिटी मध्य सेतिकी सेटा हमें करिथिले भात हांडी एटा गोटे भात दाना हमें आनिथिले चिपिबा पई किंतु तो एंटायर भात को हमें खाइबा 500 सो MEQ ऑफ जो एक्सेस एसिड रही जी 500 मिलीलीटर सॉल्यूशन रे प्रेजेंट इन द 500 cc स्टॉक सॉल्यूशन इक्वल टू 500 into 0.075 केते हला 37.5 एतिकी MEQ एक्सेस अच्छा ओरिजिनली केते नहीं थिले सब हमें कन्वर्ट करबा MEQ वॉल्यूम को बाईपास करबा 300 into 1/5 एठी हला MEQ of H2SO for originally taken माने before reaction with ammonia so it is 300 into 1/5 केते 60 300 into 1/5 हला 60 आमे एतिकी 37.5 जतु एक्सेस रहिला
ताले केते खाइला अमोनिया सो MEQ ऑफ H2SO4 consumed by ammonia जो बाहर अमोनियम सल्फेट रू इज इक्वल टू 60 माइनस 37.5 केते हला 22.5 22.5 82 22 22.5 22 तमन दैट इज आल्सो सेम एज MEQ ऑफ अमोनियम सल्फेट बापांको थिले जने मांकड़ एटी मेटाथेसिस रे किसी प्रॉब्लम नाही तो गोटे मेटाथेसिस गोटे रिडॉक्स तो एन फैक्टर चेंज हो जिवो सेमति कले भूल आंसर आसीबो हबनी तेबे जाई कि तुमे ए मेथड रे करिवो सो अमोनियम सल्फेट रो इक्विवेलेंट मास केते बाहरला हिसाब करो एटा हला 14 4 18 18 दुने 36 18 दुने 36 युक्त 96 132 by 2 because sulfate total charge is 2 minus dita ammonium is total charge is 2 plus so the n factor is 2 total positive charge the total negative charge so 66 na kete 212 66 में Yes, Yes. sir. तो 66 ammonium sulfate रो equivalent mass so mass of ammonium sulfate is equal to आगो मिली कुमारो so mass of ammonium sulfate हला मिली मोरा हला हमर केते बाहर 22.5 मिली को मारिला माने 1000 रे हर इनटू इक्विवेलेंट मास रे गुण केते सीजल तो मझरी कुआडे खसी जाइतिलो सीजल बहुत ये होची माने कोन नेटवर्क इशू होची मु जानु सर 1.485 1.483 ना 1.485 किंतु आमे ओरिजिनल इंप्योर सर 5 हां 485 485 अच्छा इंप्योर सैंपल रो मास केते थिला 1.6 1.6 तेबे परसेंटेज एटा 5 कहउछो तो ठीक अछि मु करेक्शन कर दूची 485 so 1.485 percentage of purity is equal to pure compound अछि 1.485 by 1.6 into 100 केते परसेंट केते Sir, 91 92.1 92.8 oh 818125 so धरो 92.8 92.8 चलिबो yes sir 92.8% yes sir सो एगुडा तो तुमको बाएं हाथ का खेल तुम बड़ प्रॉब्लम देथिले भी तुम ताकू पढ़ी करी ताकू छोटो कर दबो ताकू मिरराइज कर दबो मिरर भलिया देखि दबो एटा हला ताकू डाइल्यूशन करा हला डाइल्यूशन स्टॉक सॉल्यूशन ने हला तुम देखिबो कि तीन टा अंक कला परे तुम निजे डिवाइस करिवो ताकू मु आउ को बाटरे करबी पिला माने कोन करंती सो एमती करंती जदी 20 मिलीलीटर एटा को गुणी देले 15 into 1/10 1.5 MEQ खाइला 20 मिलीलीटर यदि 1.5 खाइला 20 मिलीलीटर ताहले 500 मिलीलीटर केते खाइबो 500 into 1 by केते 1.5 नहीं सॉरी 1.5 by 20 into 500 से डायरेक्टली से बेटी करिवे धरो MEQ ए 20 मिलीलीटर खाइला केते ना 1.5 MEQ NaOH ताहले 500 मिलीलीटर केते खाइबो ताहले 20 by 1.5 सॉरी 20 कुछ 1.5 by 20 into 500 सो डायरेक्टली से माने एक्सेस MEQ केते एसिड अछि बाहर कर देले हम मन इच्छा करिबा हमें V1N1 V2N2 करिके टाइट्रेशन एक्सपेरिमेंट रे नॉर्मलिटी बाहर करलु एवं सेटा स्टॉक सॉल्यूशन रे वॉल्यूम रे गुणी सो MEQ ऑफ द एक्सेस एसिड बाहर करलु जेमती करिबो so we are almost heading towards the end of our program मु खाली कहूँ आयोडीमेट्री टा कौन खाली कहीदेवी आ बहुत गुड़ाक मुझे फाइल टा देदेवी मिक्सचर एनालिसिस सेमती कर दी तीन टा एसिड मिसिबो तार मिली इक्विवेलेंट बाहर कर दबो बेस थिबो तार मिली इक्विवेलेंट एसिड बेस माइनस कर दबो टोटल वॉल्यूम कर दबो देन कोटा एक्सेस रहला ताको डिवाइड करके एसिड हो कि बेस हो तार कंसंट्रेशन बाहर करिवो रिडॉक्स टाइट्रेशन सेमती तमे मोलारिटी देइथिले भी तमे कोन करिवो ताको नॉर्मलिटी रे कन्वर्ट कर दबो M/25 अछि नॉर्मलिटी हेले एटा n फैक्टर होछि 5 KMnO4 रो एसिडिक मीडियम रे सो एटा हबो 5 रे गुणी देले 1/5 हे जिवो आउ फेरस सल्फेट रे n फैक्टर 1 फेरस टा फेरिक होछि n फैक्टर 1 सो n/10 जहा m/10 जहा n/10 से तापर V1N1 V2N2 कर दियो फाइनली नॉर्मलिटी भारी गला कि कोन भारी गला परे कर दो से पचारची व्हाट इज द मास ऑफ द KMnO4 वंस MEQ पाई गलो तो कन्वर्टेड इनटू मास तमे मन इच्छा खेलिबो तापरे एटा उडा एटा ऑक्सालिक एसिड क्रिस्टलिटी नियाला तेनु 2 वाटर 18 36 ऐड करी डिवाइड करियो बाय 2
सब गुड़ाक आयोडीमेट्री कौन गोटे गोटे रियाक्ट जो रिएक्शन रे आयोडीन धर कप कौन गोटे सैंपल जो थे जोटा आयोडीन बाहर करि पारिबो धर तमे गोटे कपर सल्फेट को एनालाइज करछो कि कपर ओर को एनालाइज करछो कपर को कपर सल्फेट कर देलो तार इक्विवेलेंट क्वांटिटी ऑफ आयोडीन बाहर करिया कहले Ki सॉल्यूशन रे ऐड करिवो सो एटा गोटे ब्यूटीफुल रिएक्शन कपर सल्फेट रे Ki देले कपरटा +2 रु +1 को आसीबो क्यूप्रस आयोडाइड हबो ता संगे आयोडीन बाहरिबो ए डिटेल रिएक्शन तो परे पार्ट पढ़िबो सो आयोडीन बाहरला आयोडीन जो रिएक्शन रे बाहरे ताको कहंती आयोडोमेट्री एवं ता केते बाहरिला ताको एस्टिमेट करिया पे वॉल्यूमेट्रिक मेथड रे सोडियम थायोसल्फेट को यूज करंती एज टाइट्रेंट एवं ए रिएक्शन टा बहुत नियारा I2 plus Na2H2O3 होवे NaI plus sodium tetrathionate इटी सोडियम थायोसल्फेट इज रिडक्टेंट जार कौन n फैक्टर 1 कारण सल्फरटा प्लस एवरेजटा +2 रु +2.5 को जाइछि 0.5 चेंज हेछि गोटे सल्फर पिछा दीटा को 1 तेणु तार मोलारिटी जहा नॉर्मलिटी सेया तेणु द मोमेंट V1N1 करके तुम जानल केते आयोडीन सेतिकी इक्विवेलेंट थिला कपर सल्फेट तेणु डायरेक्टली तुम कपर सल्फेट को पळै गलो तो एटा गोटे अछि 50 ml सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड ये मते आ गोटे आयोडोमेट्री हां याकू कहंती आयोडीमेट्री आयोडीन जो थरे कंज्यूम हो जाए टाइट्रेशन एक्सपेरिमेंट रे सेटा कहंती आयोडीमेट्री किंतु आयोडीन जोठी सृष्टि हुए बा तयारी हुए सेटा आयोडोमेट्री सो देयर आर मेनी मेथड्स हाउ आयोडीन कैन बी प्रिपेयर्ड लाइक हाइड्रोजन पेरोक्साइड कैन ऑक्सीडाइज आयोडाइड टू आयोडीन लाइक ब्रोमेट कैन ऑक्सीडाइज आयोडाइड टू आयोडीन निजे Br- हे जिवो +5 रु -1 हे जिवो एठी ब्रोमी KBrO3 रो n फैक्टर होची 6 पिला माने कर दियंती कोन 5 कारण ए बेले बेले एटा KBr नि आइ थाए KBr नेले Br माइनस तो Br2 हबो एठी Br +6 टा आगो Br माइनस को आसीबो तमन से पुनी Br2 हबो सो ओनली वन प्रोडक्ट लिखाइ थाए नियम अनुसार लिखिबा कथा से स्पेक्टेटर काटी देकि वन प्रोडक्ट लिखाइ थाए ए नियम लिखिबा कथा Br माइनस पुनी Br2 बाहरिबो जो ब्रोमाइड नैछो किंतु पोटेशियम ब्रोमेट दबो कोन ब्रोमाइड सी +5 रु -1 को जिवो आउ जो ब्रोमाइड नैछो सेटा हबो ब्रोमीन तो सेटा लेखंतिनी स्पेक्टेटर भलिया काटी देकी सब भूलभाल करंती सब देखिबो सो आयोडोमेट्री अंक करिवो आराम से तो पढ़िबो एथि गोटे डिटेल तुमको प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन मध्ये सेही भलिया करिवो सो गोटे तुमको गोटे ओवरव्यू दिया गला जे the entire spectrum of chemical arithmetic mole concept advanced mole concept जोड़ा का हमें डिस्कशन कले these are just child's play तुम्हें खाली conceptually strong हबो तुम equivalent method यूज करिवो गोटे अंक मु देइची जोटरे मु देखै देइची दे 80 ना 80 नो हां 80 दो 80 एतरे देखै देइची जे तुम equivalent method रे नॉर्मलिटी मेथड रे कले तुम भूल पाइबो इटी आयरन गोटे आलय ताको एनालाइज करा हला 4.5 ग्राम ताको डिजॉल्व करा हला सल्फ्यूरिक एसिड रे आयरन टा हला Fe2SO4 इटी n फैक्टर हला 2 ताको पुनी 1 लीटर करी पुनी डाइल्यूट करा हला 1 लीटर स्टॉक सॉल्यूशन सेतरु 20 मिलीलीटर आनी करी टाइट्रेशन करा हला से खाइला KMnO4 एति खाइला 22.4 लीटर जेहेतु KMnO4 को आगुरु स्टैंडर्डाइज करा जायनी KMnO4 इज नॉट ए वेट स्टैंडर्ड रिमेंबर मु पोटेशियम डाइक्रोमेट कहिछि सेटा मध्य इमीडिएटली करबा को पड़े हां ठीक मोर सरला क्लास आई एम जस्ट गोइंग इन 2 मिनिट्स गुड डाकी के बसा मोर सरला तेणु एठी कोन कहउतली KMnO4 को स्टैंडर्ड कर KMnO4 रो स्ट्रेंथ मेजरमेंट करिया पे गोटे स्टैंडर्डाइजेशन एक्सपेरिमेंट करा एटा गोटे अलगा एक्सपेरिमेंट 25 मिलीलीटर ऑफ स्टैंडर्ड ऑक्सैलिक एसिड तार 2 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड क्रिस्टल पर एतिकी तार नॉर्मलिटी बाहर जीवो से खाइला 25 ml सो आर V1N1 करिकरी KMnO4 रो नॉर्मलिटी बाहर करिवो दिस इज द स्टैंडर्डाइजेशन एक्सपेरिमेंट ताकू यूज करिवो एठी करिकी कलाल को फेरस सल्फेट रे एठी n फैक्टर होची 1 एठी आयरन रो n फैक्टर होची 2 तेणु सेटा को जदी 2 सेठी नै करी डायरेक्टली सेट क्लाइम करि जीवो आयरन रो 56/2 यूज करिवो तल हबनी बाय 1 यूज कले हबो तेणु बेटर हबो केते मिली इक्विवेलेंट फेरस सल्फेट बाहर कर दियो
ସେଥିରୁ କେତେ ମିଲିମୋଲ କୁ କନଭର୍ଟ କରିଦିଅ ଏବଂ ଷ୍ଟୋକିଓମେଟ୍ରି ଗୋଟେ ମିଲିମୋଲ ଦବ ଗୋଟେ ମିଲିମୋଲ ଫେରସ୍ ସଲଫେଟ୍ ତେଣୁ ଯେତିକି ମିଲିମୋଲ ସେତିକି ମିଲିମୋଲ ଥିବ ଏବଂ ତା ଦେହରେ 56 ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିକି ମିଲିକୁ ମାରିକି ମାସ୍ ମାର so with this we conclude ଆଉ conclusion ପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଯୋଉମାନେ କଟକରେ ରହୁଛ ବା ମୋର ସଷ୍ଟେନ୍ଡ ଗାଇଡାନ୍ସ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛ ମନେ ମନେ ଭାବୁଛ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଅଛ ମୁଁ ହାଇବ୍ରିଡ କ୍ଲାସ କରିବା ପାଇଁ ଆଗରୁ କରୁନଥିଲି ହାଇବ୍ରିଡ କ୍ଲାସ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରୁଛି ତ ତେଣୁ ମତେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲି ଯେ ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ ସମସ୍ତେ ମତେ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ତମେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ରେ ତମର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଦେଇଦେବ ଡାଉଟ୍ସ ଦେଇଦେବ ମୁଁ ତାକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରିକି ଛାଡ଼ିଦେବି କିନ୍ତୁ ସଷ୍ଟେନ୍ଡ ୱେରେ ଯଦି ତମେ ମୋର ଇଏ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ମୋର ହେଲ୍ପ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ମି ସେପାରେଟଲି ଇନ୍ ୟୋର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ଆଇ ୱିଲ୍ ଟେଲ୍ ୟୁ ବାଏ ବାଏ ଅଲ୍ ଦି ବେଷ୍ଟ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ Sir, ଫର thank you so much. and Thank you, sir. bye bye Thank you, sir. Thank you, sir.